A very good afternoon and welcome back to Priyanka's Godkeri, the Spicy Affairs. Thank you so much for all your motivating comments and wishes. Today I'm back again with a Gujarati traditional dish called Undhiyu. Do try it on a Sunday afternoon. Let's get started. ओके now ऊंधियू के लिए बहुत सारे वेरिएशंस है इसमें वेजिटेबल्स की चॉइस बेसिकली सो ये हमारा जो ट्रेडिशनल रेसिपी सालों से चलते आ रहा है वी यूज दीज वेजिटेबल्स तो इसमें वालोर है वी हैव मटर बरबट्टी तुअर के दाने हरबरा के दाने तोंदली गवार गाजर बैंगन आलू टमाटर ओके अब बहुत लोग बनाना को स्टफ करके सब्जी में ये करते वी डोंट लाइक इट दैट वे तो मैं पूरे बनानों को स्मैश कर देती हूँ एंड ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बेसिकली अगर आपके पास जो भी होगा गाठिया होगा या मसाला सेव होगा उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ एंड लॉट्स ऑफ कोथमीर Now for the main ingredient मुठिया I have बेसन मैं ज़्यादा लेती हूँ देन थोड़ा गेहूं का आटा थोड़ा जवारी का आटा इफ़ यू हैव बाजरा का आटा यू कैन टेक दैट टू लॉट्स ऑफ मेथी चॉप्ड कोसली एंड नींबू इसके साथ नींबू के साथ शक्कर भी लगेगा एंड नमक भी लगेगा अब इसका आटा कैसे बांधना है मुठिए का वील सी दैट ये बेसिकली पूरी जैन डिश है इसमें लहसुन कांदा बिल्कुल यूज नहीं होता है इसमें we'll take मेथी बेसन ज्वारी and atta. Pinch of haldi, मिर्ची इसका बेसिकली टेस्ट होता है खट्टा मीठा एंड थोड़ा सा स्पाइसी इट हैज टू हैव इट हैज टू बी बेसिकली वेरी टेस्टी बिकॉज मेथी है इसमें इसमें नमक जाएगा नींबू मैंने ऑलमोस्ट एक बड़ा नींबू लिया है इसके सामने 2 tablespoons of sugar इसको पहले आप हाथ से मिक्स कर लो सब मसाले को तेल start adding water मैंने तेल रख दिया ऑलरेडी गर्म होने के लिए अब इसके ऐसे बना दो तेल अच्छा गर्म हो गया
mustard seeds. सूखी लाल मिर्ची, fresh curry patta from my garden, lots of kothmir, 70% आलू हो गए, बैंगन, इसमें हम लोग बनाना डाल देते हैं। मैं पूरा फोक से मैश करके ये बनाना डाल दूँ। ये मशी हो गए हैं टमाटर, बैंगन हो गया है, this is done. अब इसमें हमारा जो मैंने ये सेव का किया है ये डालेंगे। इससे बाइंडिंग आएगा ग्रेवी में, बिकॉज वी आर नॉट, दिस इज अ टिपिकली जैन डिश। Again, add lots of kothmir, 2 tablespoons भर के मिर्ची, धनिया पाउडर, 1 tablespoon, 2 tablespoons of गरम मसाला। अब इसमें हम ये सब सब्जियां डाल देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें गरम पानी डाला है, इसमें और ग्रेवी आएगा। एंड आई हैव आल्सो एडेड 1 tablespoon ऑफ नमक। ये सब्जी को कुक होने में और 15 मिनट लगेंगे, तो मैंने सिम पे रखा है और ऊपर लिड में बहुत सारा पानी डाला है। यही पानी हम लोग ग्रेवी बढ़ाने में यूज करेंगे। इसमें तेल ऊपर आ गया है और ये जो गरम पानी हुआ, I'm adding this. If you want to cut the cooking time, you can steam the vegetables in the cooker, and the same process you need to follow. So finally this is ready. मैंने इसमें लास्ट में मुठिया, फ्राइड आलूज और बैंगन ऐड कर लिए हैं। So please do try this dish, subscribe to my channel and keep sharing. Thank you.